Let me discuss some of the word problems based on simple interest and amount. So worksheet 3, question number 4C. A man borrowed 700 rupees from his friend. He promised to return back the amount after 6 months at an interest of 8% per annum. How much money will he pay back after 6 months? Means एक आदमी अपने दोस्त से 700 रुपीज़ उधार लिया और 6 महीने बाद 8% इंटरेस्ट पर एनम पर उन्हें वापस करना था. सो पे बैक मीन्स कितना वापस करेंगे. ही हैज़ टू रिटर्न 700 रुपीज़ मीन्स प्रिंसिपल ही हैज़ टू पे बैक प्लस the interest for 6 months also he has to pay back. That means in this question you had to find the amount. So you see P is 700 rupees, rate of interest is 8% per annum, time is 6 months, so you have to convert it into year. So 6 by 12 is half year. Then simple interest is, you will solve it, P into R into T by 100 is 28 rupees. It is the simple interest. So he has to pay 700 plus 28, which is the amount is P plus SI is 728 rupees. The man will pay back 728 rupees after 6 months. The number D, Surender deposited rupees 2500 in a bank at 12% interest per annum. He withdraws his money after 2.5 years. Out of this amount, he buys an almirah for 3000 rupees. How much money is left with him? So try to understand. So Surendra deposited to 2500 means this is the principal. This 12% is the rate of interest, and he withdraws his money after 2.5 years means 2.5 years is the time. Means after 2.5 years he withdraws. Withdraws means अपने पैसे बैंक से निकालना. सो वो निकालेंगे जब 2.5 years बाद. सो क्या निकालेंगे? ही विल विड्रॉ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट फॉर 2.5 years. सो जब वो पैसा निकालेंगे तो उन्हें क्या क्या मिलेगा? प्रिंसिपल भी मिलेगा प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अमाउंट. P is 2500, R is 12% per annum, time is 2.5 years means 5 by 2 years. Simple interest is 750 rupees and amount is 2500 rupees plus 750 is 3250 rupees. So जब वो बैंक से अपना पैसा निकाले, so he will get back 3250 rupees. Now the second part is out of this amount, यानी उस पैसे में से he buys an almirah for 3000 rupees. So how much money is left? So he had 3250 rupees. So you write Surendra withdrew 3250 rupees. उन्हें उतना मिला. Then he buys an almirah. So cost of almirah is 3000 rupees. Then money left is 250 rupees. So this much money is left with him. Now some word problems from the Brainteasers. A farmer borrowed 2400 rupees at 12% interest per annum. At the end of 3 years, he repaid 1200 rupees and a cow for the balance amount. Find the cost of the cow. Means एक किसान 2400 rupees उधार लिए 12% इंटरेस्ट पर. एट द एंड ऑफ 3 years 3 साल बाद उन्होंने चुकाया, अपना उधार चुकाया. किस तरह से? ही रीपेड 1200 रुपीज एंड अ काउ, यानी उन्होंने 1200 रुपये और एक गाय देकर अपना उधार चुकाया. एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ. सो हियर सी दिस इज द प्रिंसिपल, दिस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस द टाइम. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड हाउ मच मनी ही हैज़ टू रीपे. पहले ये निकालिए कि वो किसान को कितना चुकाना था. तो कितना चुकाना था तो क्या ये 2400 रुपये भी चुकाएंगे प्लस 3 साल में उनका जो इंटरेस्ट बना होगा वो भी चुकाना होगा. मीन्स यू हैव टू फाइंड अमाउंट. सो फर्स्ट फाइंड SI 864 रुपीज़. अमाउंट इज P प्लस SI is 2400 plus 864 is 3264 rupees. यानी the farmer had to pay this much. लेकिन उन्होंने चुका तो दिया है, लेकिन किस किस फॉर्म में चुकाया, किस तरह से? He had paid 1200 rupees in cash and a cow.
तो ये दोनों का कॉस्ट मिला के या वैल्यू मिला के इतना उन्होंने चुकाया है. सो काउ का कॉस्ट क्या होगा? द फार्मर हैड टू रीपे 3264. उन्हें इतना चुकाना था. ही रीपेड इन कैश 1200 रुपीज़. उन्होंने कैश में 1200 दे दिए. तो बाकी जो बचा फॉर द बैलेंस अमाउंट उसके बदले में उन्होंने गाय दिया. तो बाकी जितना पैसा बचा वही काउ का कॉस्ट है. सो द कॉस्ट ऑफ द काउ इज द रिमेनिंग अमाउंट विच इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट find 2064 rupees, that is the cost of the cow. Then number 7, Mr. Kannan had deposited 2500 rupees in a bank at 12% interest per annum. After 3.5 years he withdraws this amount. Out of this money he wants to buy a dressing table costing 4000 rupees. How much more money does he need? See, this problem was earlier discussed, this type of problem. उसमें थोड़ा सा अलग था कि कितना पैसा बचा. Here you have to find how much more money he needs. So let us understand. Deposit किए means this is the principal, 12% is the rate of interest, 3.5 years is the time. So after 3.5 year उन्होंने अपना अमाउंट निकाल लिया बैंक से. तो अमाउंट निकाल लिया means what does he get? You will get the principal as well as the interest. So first you find out the amount. So SI is P into R into T by 100 is 1050 rupees. Then amount is 2500 plus 1050 is 3550 rupees. Means Mr. Kannan will get this much money after 3.5 years. Then out of this money, इस पैसे से उन्होंने क्या किया? He wants to buy a dressing table costing 4000. So see, उनके पास तो सिर्फ 3550 रुपीज़ है, लेकिन जो ड्रेसिंग टेबल का कॉस्ट इज़ मोर देन दिस अमाउंट, तो ज़्यादा है, यानी उन्हें और पैसों की ज़रूरत होगी. सो दैट इज़ आस्क्ड हाउ मच मोर मनी डज ही नीड. सो द डिफरेंस यू हैव टू फाइंड. 3550 रुपये हैं और 4000 उन्हें खरीदना है, तो उन्हें और कितना चाहिए? सो मोर मनी ही नीडेड. यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट. अमाउंट निकालने के बाद लिखो वो है क्या. सो दिस इज द मनी मिस्टर कन्नन हैड and cost of dressing table is 4000. So you can't subtract here because this is smaller, this is greater. So you have to find more money needed is the difference between these two. 4000 rupees minus 3550 is 450 rupees. So he needs 450 rupees more to buy the table. Question number 5 of brain teaser you have to solve on your own. Let me discuss how to find. Sohan deposited 6000 rupees in a bank at 7.1/2% per annum for 3 years. Mohan deposited same 6000 rupees in another bank at 11% per annum for 2.5 years. Who will get more simple interest? See, two persons are there. They have kept their money in different banks at different rate of interest for different time period. So किसको ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? इट्स ईजी. सो यू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सोहन एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय मोहन सेपरेटली, अलग अलग. दिस इज द P फॉर सोहन, R एंड टाइम, and for Mohan this is P, this is R and this is T. So separately you find two simple interests, one for Sohan, one for Mohan. Then you compare these two to find out who gets more simple interest.